This video is for informational purposes only based on personal research and should not be considered as financial advice. It does not constitute any recommendation to buy, sell or hold any securities. Viewers are advised to conduct their own research. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू कमोडिटी मार्केट डिस्कशन विद एसडी। मैं हूं एसडी, आप लोग जानते हैं, आपके फ्रेंड एंड गाइड टू द ग्लोबल मार्केट्स। सो आज का जो वीडियो है, हम लोग थोड़ा गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। मेनली गोल्ड इज अ वंडरफुल कमोडिटी, वन ऑफ माय फेवरेट कमोडिटी है मेरा। एंड in this analysis I'm going to use my fountain of gold setup because I use this one for my trading. Kindly note, none of this discussion is any trade recommendation. This is broadly what I think, my video log, or what I'm planning to do. This is basically publicly I'm sharing what are my ideas. So don't consider these as any trading suggestions because trading is very risky, inherent. It doesn't suit everyone. So mind that risk, and then definitely we should all grow our wealth. So what I see in weekly, as per my setup, I see significant bullishness that I think you can also see, easy to see with the colors. Colors बहुत आसान हो जाना चाहिए. So broadly मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे 12 factor setup में 10 is bullish, that is significant. Win probability is projected around 75%. Strength meter, I can see gold is on the rise, and so far strength wise the best performer, and it is measuring. If we want, let's go and measure the strength, say about last two trading days, or let me make it 3. So overall क्या strength change हुआ, I can see gold up 2.4, silver up 4, aluminium declined, zinc declined, copper declined. Crude oil got some strength in the last 3 days of trading. So overall, gold is, I think, long-term trend is once again after a slight flat correction के बाद it is back in strength. So मेरा view, मेरा outlook remains bullish, for example. And let's go to the daily chart. डेली चार्ट में मैं क्या देख पा रहा हूँ, द बुलिशनेस वापस आ गया है, एंड दिस आई हैव आल्सो शेयर्ड पब्लिकली थ्रू माय वेब पेजेस, सो आप वहां पे भी नोट कर सकते हैं. सो ब्रॉडली व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट मोर बुलिश स्ट्रेटजीज, दैट इज एमसीएक्स फ्यूचर्स के साथ एंड विद द ईटीएफ. एंड मेन रेजिस्टेंस दैट आई सी हियर इज अराउंड 5360 इज द मेन रेजिस्टेंस एरिया फॉर मी. And I'll probably be using fine tuning to enter further quantity. So overall माहौल definitely bullish. वापस आ गया गोल्ड का 89% चांस कि बुल्स gonna win. This is projected. We can't know exact probability, but it's giving me basically bullish vibe दे रहा है. तो इंडिया गोल्ड का भी अगर चार्ट देखेंगे, लेट्स यूज गोल्ड मेगा, क्योंकि इस टाइम पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होने की वजह से वी गेट डिस्टॉर्शन हो रहा है बहुत कमोडिटी में. गोल्ड मेगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, बाई सिग्नल रिलेटिवली लोअर स्ट्रेंथ बिकॉज इंडिया वाज प्रीमियम में चल रहा था तो डीप करेक्शन हुआ. दैट्स व्हाई इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ व्हाट वी हैव सीन इन कॉमिक्स. बट यहाँ पे भी एक टर्न अराउंड डेफिनेटली दिख रहा है. And I'll say the main resistance area to be 1,71,500, 72,000 around. And if silver can make base around 159, then further strength we can expect. But silver remains relatively more risky in terms of trading, investing compared to the gold. So gold always will remain my most favorite counter. So what I can see more with, let's say, silver chart. Let's go comic silver. This is a significant comeback. This I have shared last discussion in my web pages again. So keep following that for regular updates. I'll definitely look for these areas as resistance, rainbow levels as resistance. So broadly bullish comeback. How further kitna strength बढ़ाएगा can't say right at now this point. लास्ट 3 days of trading में significant strength increase किया है all the counters. Let's look at crude oil.
बुलिश बट करेक्शन के क्रूड इज मोर गोइंग इन द जिगजैग फॉर्मेट, तो इसमें आइदर पेशेंस या तो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रेफर्ड होगा. इट इज शोइंग स्ट्रेंथ, कोई डाउट नहीं कि क्रूड इज सम स्ट्रॉन्ग, बट मोमेंटम इट डज नॉट हैव. प्रोबेबली ग्रेजुअली इट इज बिल्डिंग अप. क्रूड का काफी सारा पॉजिटिव है. आई थिंक बिग प्लेयर्स आर आल्सो बिल्डिंग अप पोजीशन इन द क्रूड ऑयल and lot of other different kind of commodities here. सो ओवरऑल क्रूड का माहौल बुलिश है, बट इसको हेज के साथ मैं पोजीशन एंड जो सोच समझ के क्वांटिटी रखना पसंद करूंगा. सो लिमिटेड क्वांटिटी विथ प्रॉपर हेज विद ऑप्शन का. रिलेटिवली नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल इज मोर लिक्विड कंपेयर टू अदर्स, सो सम काइंड ऑफ हेज कैन बी डन बाय देयर. तो हेज के साथ ट्रेड करना सही रहेगा नेकेड से, क्योंकि मोमेंटम उतना तगड़ा मुझे नहीं दिख रहा है इन क्रूड ऑयल. Let's look at natural gas. Natural gas is a very range bound right now, and winter खत्म हो जा रहा है, so crazy moves are coming to an end. So overall daily chart में मैं इसमें रेंज देख पा रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी मीटर भी वैसा ही सजेस्ट कर रहा है कि काइंड ऑफ अ रेंज गोइंग ऑन हियर. बट फिर से एक बुलिश वाइब्स वापस आया है. पॉसिबली वी विल बी एबल टू सी दैट इन द शॉर्ट टर्म, बट इट्स मोर ऑफ अ रेंजिश राइट नाउ. मेरे हिसाब से काफी रेंजिश है. Beautiful comeback नहीं है, so be careful while trading this. So we have to deploy possibly rangish approach towards slight bullish vibes, but natural gas still winter चला गया है, but अभी भी March is not over when the inventory starts to build up. तो अभी भी थोड़ा क्रेजी मूवमेंट्स हो सकता है, बट इट्स स्टिल मैं तो बोलूंगा एक रेंज बाउंड जोन लग रहा है मुझे विथ 4 पॉइंट अबाउट $4 मान लेते हैं, एंड लेट्स से 2.5. सो रेजिस्टेंस जो या सपोर्ट जो होता है एक जोन होता है. सो गेटिंग ए फेयर आइडिया ऑफ द जोन इज इम्पोर्टेंट. तो ओवरऑल नेचुरल गैस भी मुझे रेंजिश दिख रहा है, बट क्रूड ऑयल के रेंजिश इज डिफरेंट. क्रूड ऑयल रेंजिश है, बट उसमें एक कंटिन्यूअस एक बुलिश फ्लो टोन हो रहा है. सो क्रूड पॉसिबली फर्दर मूव अप कर सकता है, बट विद दिस सिमिलर रेंजिश टोन के साथ इट विल पॉसिबली गो अप. दिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन, दिस इज जस्ट मार्केट को देख के जो लग रहा है. And let's look at a few other commodities, friends. Let's look at zinc, for example. Zinc ये बेस मेटल में उतना स्ट्रेंथ है नहीं, बट आई थिंक इसको मैं फंडामेंटली थोड़ा स्टडी करूंगा विद चाइना, कि आई थिंक फर्दर आइडियाज कैन कम अप विद बेस मेटल. एंड विद इन ये जो रॉक काइंड ऑफ कमोडिटीज होंगे होते हैं, तो उसमें आई थिंक आयरन ओर मेरा फोकस में आएगा. आयरन ओर डेफिनेटली आई बी स्टार्टिंग, नॉट जस्ट प्राइस वाइज, उसके अंडरलाइन क्या चल रहा है इन द आयरन ओर माइन. सो इसके ऊपर आई वी विल हैव टू आई स्पेसिफिकली फोकस ऑन इट, ऑन बाद में इट कैन कन्वर्ट टू अ ट्रेड आइडिया. So if I get any idea, I'll try to investigate with some numbers, get the fundamentals, what's the situation is with the numbers, gauge it, and with the geopolitical and others, I'll add that to the mix. कि इससे क्या होता है, मेरा जो idea guesstimate it gets better, कि which path these commodities can take, where so that I can position myself. सो जिंक में मुझे दोस्तों रेंज दिख रहा है, एंड कॉपर, इंडियन कॉपर ही देख रहे हैं. वी कैन लुक एट इंटरनेशनल ऑल्सो विच विल HG1, बट एक्चुअली इंडियन कॉपर एलएमई के ऊपर उतना ज्यादा फोकस करता है. क्या दिख रहा है कॉपर में? इज बियरिशनेस. इट इज मोर बियरिश कंपेयर टू जो मेटा जिंक हम लोग देखे. सो कॉपर इज नॉट रियली ग्रेट currently. Short term it could be rising back, but overall copper is bearish. एंड आई लाइक टू पॉसिबली सी आइदर एक छोटा अपसाइड एक रेंज रहेगा, या फर्दर कम डाउन मोर टूवर्ड्स 1000. चाइना का जो हॉलीडे भी चल रहा था, सो ओवरऑल कॉपर का डिमांड आई एम नॉट सीइंग दैट स्ट्रॉन्ग राइट नाउ. सो ओवरऑल जो बुलिश मुझे सबसे लग रहा है दैट इज द गोल्ड, followed definitely silver and crude oil. These looks relatively more bullish. Zinc looks range, copper bearish, and natural gas is also range.
So that's my idea based on the daily chart. I thank you so much, friends, watching this small discussion regarding commodities. Please, once again, this is the none of these are trade recommendation, but अगर ये discussion आपको help हो रहा है, don't forget to put a thumbs up. All the best from my side, and as always, happy trading, happy investing.